हेलो। जी सर। नहीं सर, अभी तो तीन चार लोगों ने ज्वाइन कर लिया है क्लास स्कूल के। एक एक मिनट सर, मैं देखता हूँ। एक मिनट मीट, हाँ जेड। हाँ सर। हाँ। हाँ जी। हाँ सर, यही है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता सर, क्योंकि पांच छह लोगों ने, संगीता मैडम ने भी कर लिया ज्वाइन, और तीन चार टीचरों ने और भी ज्वाइन कर दिया, प्रीति मैडम ने भी कर लिया सभी। मैं अच्छा। सर मैंने मीट का लिंक दोबारा ग्रुप में डाला है। अच्छा, लेकिन सर तो यही कोड बता रहे हैं, जो कोड है हमारा मीटिंग का चल रहा है वही कोड है सर का। मैं एक बार आता हूँ सर नीचे, मैंने ऑनलाइन तो कर दिया है, देखता हूँ सर। आता हूँ सर मैं। डॉक्टर जोशी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर अभी बर्थवाल सर, जोशी जी, अभी कोई नहीं जुड़े। नहीं सर, जोशी सर तो शायद हाँ जुड़ गए जो हैं। सर जुड़ गए, जोशी सर जुड़ गए, SCRT। हाँ हाँ ठीक। जी। जोशी जी जुड़े हुए हैं, लेकिन बरफॉल जी और जी।
संगीता मैडम एक बार तरन्नुम खान को फोन करना है, 1 मिनट। जी सर, करती हूँ। हाँ बटवाल जी, नहीं नहीं, आप गूगल लिंक पे क्लिक करिए, आप डाल दिया उसमें तीनों वो मीट पे। आप गूगल मीट खोल लीजिए, गूगल मीट के थ्रू आपको लिंक दिया हुआ है ना। हाँ तो
तो किया था शायद। सर मेरे ख्याल All members have all members have joined. या सर. So apart from our panelist and presenter, all can switch off their video mode. Madam Preeti Singh, please start. Yes, sir. Jai Hind to everybody. First of all, I take the opportunity to welcome today's guest speakers, Mr. Dinesh Vartwal, Principal, Doon International School, Dehradun. Sir, I extend a cordial welcome to you. Dr. Ankit Joshi, Lecturer, SCRT, Uttarakhand, DPhil in Political Science. He is a gold medalist, UGC NET and USET qualified in Political Science, and he is qualified UGC NET in Education also. Sir, we welcome you on board. Next, the third guest speaker is Mrs. Tarannum Khan. She is PRT in KV Upper Camp. Ma'am, we welcome you wholeheartedly. And today's this webinar is in connection of the webinars which are going on board with CBSE. We have been noticing a lot of webinars going on with the same topic: innovation, innovative pedagogies, and this is one of the same series. So I extend my welcome to all the guests once again, and those who have joined this webinar as participants also. So basically we have to understand first of all, what does the topic mean? So may I ask Mr. Vinod? Vinod sir, are you there? First of all, I would like to get the members involved in the webinar. Can anybody tell me the meaning of innovative pedagogy? Like, we have been experimenting a lot with education these days, and since the COVID-19 has started, we have done a lot of innovations in the field of education. So, is there anybody who can tell me what is the meaning of innovative pedagogy? Okay, let me take this liberty. So, innovative pedagogy, as far as my knowledge says, is innovative as an educational practice or strategy or method which is implemented in the interest of students, and that results in a transformative experience for the students, as far as I could understand the topic.
So and there are so many innovations going on these days, since like we have been टीचिंग ऑनलाइन, कोई कोई नहीं सोच सकता था आज से 1.5 साल पहले कि टीचर्स ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम टीचिंग फ्रेटर्निटी में भी पॉसिबल है, ये हमें कभी कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। बट ड्यू टू दीज अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेस we came to know that teaching can be done from home also, although there are some negative aspects also, but I have realized that we can use our household material to make students understand whatever we want to teach them. लाइक आप घर में हैं तो अगर आपको बताना है छोटे बच्चों को, स्पेशली अगर आप बताना चाहते हो कि एप्पल क्या होता है, तो यू कैन टेक आउट एन एप्पल फ्रॉम योर फ्रिज एंड यू कैन शो देम दैट दिस इज एन एप्पल, सो ऑन सो फोर्थ। तो कुछ चीजें हमने सीखी कि हम अगर किसी भी वजह से बीमार हैं या किसी भी वजह से छुट्टी पर हैं, देन आल्सो वी कैन टीच आवर स्टूडेंट्स। कोई बार नहीं रह गया हम लोगों के लिए, तो दैट वाज आल्सो एन इनोवेशन। अब यहाँ पर बात आती है कि हाउ टू एंगेज स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक आवर टीचिंग जॉयफुल। सो मुझे लगता है कि हर एक टीचर अपनी क्लास में कुछ ना कुछ करता है जिससे कि वो बच्चे एक जॉयफुल एक्सपीरियंस गेन करें। हर कोई टीचर अपनी क्लास में ऐसी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस और मेथड इंट्रोड्यूस करना चाहता है कि वो बच्चों को एंगेज रखे और टीचिंग उसकी एंजॉयबल हो बच्चों के लिए। अदरवाइज तो दे विल स्लीप इन द क्लास, इफ इट बिकम्स बोरिंग चिल्ड्रन विल स्लीप इन द क्लास। सो कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं, कुछ गेम खिलाते हैं, कुछ उनसे डिस्कशंस करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, या हम उनको कहीं आउट विजिट पर ले जाते हैं किसी म्यूजियम की या कहीं भी जहाँ पर हम थोड़ा सा एजुकेशन से कोरिलेट कर सके उनको। हम एग्जांपल्स देते हैं, स्टोरी टेलिंग कराते हैं। लाइक आई एम वर्किंग एज अ पीजीटी ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश, सो ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं, सेमिनार्स कराते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। उसके अलावा हम बच्चों को स्पीच कॉम्पिटिशन्स यूजुअली कराते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू बहुत सारी चीजें बच्चों को बताते हैं। तो ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ दिस इनोवेटिव method. So basically I would like to present the screen also, just a second. नेट कैसे चला गया? Okay, so whatever I could collect here, these are the 5 E's of education: engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. We all working on these points. Like we engage the children, then we get them explore things on their own, then we try them to explain the things whatever they have learned. We want them to explain that in the classroom. And elaborate. Elaboration is also again a part of explanation. हम उनको कहते हैं कि बच्चा जो भी आपको समझ में आया as per your understanding, please elaborate this topic, or we give them some hints to elaborate. Then at last comes evaluation. So last में हम उसकी understanding को evaluate भी करते हैं by a lot of means. अभी तो इतने सारे चीजें हैं हमारे सामने, हम गूगल फॉर्म के थ्रू भी इवेल्युएट करते हैं, वर्बली भी इवेल्युएट करते हैं, वाइवा लेते हैं बच्चों का, डिस्कशन के थ्रू भी इवेल्युएट करते हैं, एंड पेन पेपर टेस्ट तो जो ट्रेडिशनल रहा है दैट इज देयर। सो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच वी आर कंडक्टिंग दीस डेज फॉर द स्टूडेंट्स, एंड टीचिंग हैज बिकम सो मच चैलेंजिंग क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। अभी हम लगातार इनोवेशन ही सुनते आ रहे हैं। तो थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करके यहाँ पर प्रेजेंट कर सकूं, बिकॉज टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा मुझे लगा कि ये जरूरी होगा। तो दीज आर लाइक 10 innovative learning strategies for modern pedagogy. First of all, crossover learning.
Crossover learning is learning in informal settings, such as meeting or after school clubs, and these can link educational content with issues that matter to learners in their lives. जैसे कि हम किसी म्यूजियम में या किसी लाइब्रेरी में या किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे बच्चों को ले जाते हैं, और उसके बाद वहां पर बच्चे अपने आप सीखते हैं, वो उससे रिलेट करते हैं अपनी स्टडीज को. एंड हियर द रोल ऑफ अ टीचर is to propose and discuss questions in the classroom after the learners explored in the museum or in the place where they have gone to visit. So this is crossover learning. Then comes learning through argumentation. Learning through argumentation means where teacher can spark meaningful discussion in classrooms by encouraging students to ask open-ended questions and restate remarks in which scientific language may develop, and students can use models also. Models or models जो basically prepare किए जाते हैं बच्चों के द्वारा, so that is a good way to learn through argumentation. Then comes incidental learning. Incidental learning is an unplanned learning, like by incident जो हम सीख जाते हैं. जैसे कि बहुत सारे टीचर्स को शुरू में मोबाइल के थ्रू पढ़ाना नहीं आता था या लैपटॉप के थ्रू पढ़ाना नहीं आता था, तो हम लोगों ने इसको कर करके सीखा है. We have consumed our minds and energy and time to use our mobile phones or laptops to learn it. So incidentally हम बहुत सारी चीजें सीख गए अपने आप करते करते. In the same way, we provide such an atmosphere to the students where they can learn from their routine. जो भी हम दिन भर में कर रहे हैं उसी से बच्चे सीख जाते हैं. Then context based learning. Context based learning में हम enable करते हैं उनको to learn from their experiences by interpreting new information in the context of what we already know. बहुत सारी चीजें हमको पहले से पता होती हैं, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि यहाँ पर स्टोरी टेलिंग का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि स्टोरी टेलिंग में आपने थोड़ा सा उनको शुरू के 3 सेंटेंसेस अगर बता दिए तो दे कैन कम विद न्यू स्टोरीज. सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग. देन कंप्यूटेशनल थिंकिंग. इट इज a powerful approach to thinking and problem solving. It involves breaking large problems down into smaller ones, and it has been seen in this COVID-19 period a lot. So it is very well form of learning. And after that we have learning by doing with remote labs. साइंस से रिलेटेड है ये थोड़ा सा कि लैब्स जो हैं वो ऑनलाइन भी डेवलप की जा रही हैं अभी, और ऑनलाइन लैब्स में बच्चे कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, साइंटिफिक टूल्स को कैसे यूज किया जा सकता है, दैट हैज बीन प्रैक्टिसिंग एंड प्रोड्यूस्ड रिसेंटली. सो दिस इज अ न्यू फॉर्म और इनोवेटिव फॉर्म ऑफ टीचिंग साइंस और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विद रिमोट लैब्स. देन कम्स embodied learning. Embodied learning means where we use our body and expressions to teach or to impart education. So it involves self-awareness of the body interacting with a real or simulated world to support the learning process. It is basically art-based. Then adaptive teaching comes where all learners are different, but the teaching material remains the same. That creates a lot of problems for लर्नर्स. यूजुअली ऐसा होता है कि हमारी क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, हर किसी की क्लास में होते हैं. सम स्टूडेंट्स आर स्लो लर्नर्स, सम आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, बट द असेसमेंट स्ट्रेटजी इज द सेम फॉर ऑल. हम सभी को सेम तरीके से मेजर करते हैं. तो एडेप्टिव टीचिंग हमें ये बताती है कि वी हैव टू हैव डिफरेंट पेडागोजीज टू टीच डिफरेंट kind of children, and we should give them different assignments or different modes of assessment to assess them or to judge their abilities. Then 9th point is analytics of emotions. This is an automatic method of eye tracking and facial recognition can analyze how students learn and then respond differently to their emotions
and cognitive skills. For classroom teaching, a promising approach is to combine computer-based systems for cognitive teaching and with the expertise of human teachers. Here, the use of computer is vital. And at last, there is stealth assessment. Stealth assessment matlab कि the automatic data collection that goes on in the background when students work with rich digital environments can be applied to stealth assessment of their learning process. It borrows techniques from online role. जैसे कि हम गेम्स खेलते हैं, वारक्राफ्ट नाम का एक गेम है जिसमें कि सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेता है डाटा about players' actions. So it collects the data automatically. So in this way, like I try to collect these 10 innovative strategies which are being implemented in the process of education, and I hope that we will learn more about this topic. So now I would like to welcome the first guest speaker of today's webinar, Mr. Dinesh Vardwal, sir. Over to you, sir. मैम प्लीज पहले प्रिंसिपल सर को इनवाइट कीजिए वेलकम करने के लिए. Oh, sorry, ma'am. Actually, I thought I had to speak after principal, sir. So, okay, sorry, sir. Sorry, extremely sorry. First of all, I would like to invite principal, sir, to extend a cordial welcome for these speakers. Sir, please. Sir, I feel your mic is off. Hello. Jai Hind, everybody. Jain sir. Jai sir. Well, we have assembled here on a webinar on innovative pedagogies to promote enjoyable and engaging learning. So, first of all, already presenter has given the basic idea about this. But first of all, I extend a very warm welcome to our member of panel, Sri Dinesh Vardwal, Principal, Doon International School, Dr. Ankit Joshi from SCERT, and third panelist, Mrs. Tarannum Khan, very, very wonderful primary teacher from our Kendriya Vidyalaya Sangathan, AB Upper Camp. A very warm welcome to our officers from regional office, our deputy commissioner, assistant commissioner, principals of all Kendriya Vidyalayas as well as different schools, our teachers, students, those who have joined through YouTube link for this webinar. Friends, well, innovative pedagogy to promote enjoyable and engaging learning. Of course, COVID is one thing which has affected our schooling system, but this very aspect of promoting enjoyable and engaging learning is not only in context of the present online classes, but it is for a very long period. The context is how we can make our teaching learning enjoyable as well as engaging. What are the various ways and means? The present scenario basically is that the traditional method of teaching is teacher is just transacting the content without ensuring that whatever is transacted in class is being learned by the students or not. Today I was seeing the same webinar in the morning. It was a webinar organized by NCERT, and there they have given really beautiful innovative ideas of making classroom teaching enjoyable and engaging. Because if you ask a student, if you take a student to a garden or kitchen garden asking कि ये पौधा किसका है, लौकी का पौधा या तोरी का पौधा या खीरे का पौधा है, तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि लौकी है कि तोरी है कि खीरा है, क्या लर्निंग हो रही है उसकी. ऐसे ही अगर हम उसको गाड़ी, स्कूटर या किसी और भी चीज के बारे में बात करते हैं, तो उसको जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में नहीं पता है, ये सब चीजें क्या है, तो फिर क्या लर्निंग हो रही है. इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो हमारा क्लासरूम कंटेंट भी होता है उसमें क्या होता है, समटाइम इट इज
traditional method and very boring. So to avoid that, what actually we should adopt in our classroom teaching? This webinar is basically organized for that. This was my welcome address, and obviously our member of panel will enlighten us on the various methodologies, various pedagogies, various innovative pedagogies on enjoyable and engaging learning. So without taking much of the time, I now invite our first panelist, Sri Pedagogy, to throw light on the topic, please. माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक 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 बरथौलजी, बरथौलजी आपका माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, नाउ इट इज। हाँ Sir, good evening, sir, and good evening to all KBS officers, respected principals, and my dear fellow colleagues. It is a proud privilege for me that I am part of KBS webinar today. And without wasting time on this, I will do the track. And as stated by respected sir, to me that I have to speak something about the innovative idea how we can just make our classroom more interactive and effective, where the students are nowadays lagging. So I will be bilingual because nowadays students understand bilingual, so I will be bilingual. So first of all, we have to understand that what is education system. As we know everyone that what is education. हम जो आज सफर कर रहे हैं, देखिए एजुकेशन के 4 कोर कंपोनेंट होते हैं। वन इज कॉल्ड स्कूलिंग। स्कूलिंग पिछले 2 साल से बंद है लगभग। अब धीरे-धीरे वी आर नाउ गेटिंग स्टूडेंट एंड ऑफलाइन classes are started and gradually strength is increasing. Second is called teaching. Third is examination. Fourth is evaluation. Examination evaluation component we will not take here. We will just isolate, or I will isolate myself within schooling and learning. Another topic is given to me, pedagogy. So first we have to understand है क्या। देखिए जब तक इसको लिंक नहीं कर पाएंगे, everyone knows pedagogy we keep saying it, लेकिन है क्या? This is basically a systematical process of learning and teaching process. अब जब इसमें एक systematical process आ गया learning and teaching का, तो अब हमें इन दोनों को एक साथ जोड़ना है। It means we have to work on inclusive education system. हम जो हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था, जिसको हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, नाउअडेज वी आर इन अनट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। ये जो हम ऑनलाइन, जैसे भी मैडम ने बताया, प्रीति मैम ने, कि दिस इज अनट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। हम इसके तैयार नहीं थे। ट्रेडिशनल क्या था? लर्निंग बाय मेमोराइजेशन। अभी तक जो हम करते हैं वो लर्निंग बाय मेमोराइजेशन था। एनईपी 2020 की क्यों डिमांड पड़ी? क्यों वी नीड, व्हाई वी नीड दैट एनईपी 2020? हम पहले बहुत खुश थे। Why we are in the need of NCF 2020? What wrong with NCF 2005? तो हमें ये, जब हमने इसको स्टडी किया दोनों में, तो ये पाया कि NCF 205 और अर्लियर NEP जो हमारी थी वो प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं थी। That was based on learning by memorization. जबकि आज का जो नीड है, today's need is learning by doing, learning by experiment. I keep saying this to my fellow colleagues in my school that kitchen is the best laboratory. Your mother keep inventing so many things for you and fulfill your demand. So you understand, and your mother is the best, scientist who always gives innovative idea and do innovative things within the kitchen. So kitchen is the best laboratory, and we have so many things to learn from it. अब जब हमें बात समझ में आ गई कि लर्निंग बाय डूइंग करनी है, तो क्वेश्चन उठता है कि हमें करना क्या पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए हमें ब्लेंडेड एजुकेशन को ऑप्ट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए हमें आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन को करना पड़ेगा। मींस जो हमारी एनईपी पुरानी थी वो थी एजुकेशन, जैसे बहुत अच्छा सर ने बोला और मैडम ने बोला कि हमारी एजुकेशन क्या थी, एजुकेशन इक्वल्स टू बर्डन, वो हमारे बर्डन फील होती थी। लेकिन सर हमें क्या करना है, हमारे स्टूडेंट जो टेक्नो फ्रेंडली हैं उनको हमें एजुकेशन इक्वल्स टू जॉयफुल, हमें जॉयफुल बनाना है। और आज के जो बच्चे हैं वो हमारी तरह नहीं है, उनका एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो स्किल है वो बहुत ज्यादा है। तो जब हम जानते हैं कि उनकी स्किल बहुत ज्यादा है, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, और वो
ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 6+ कर रहा है, जो कि बहुत एक स्टैंडर्ड IQ लेवल माना जाता है। तो हमें एक क्रिएटिव थिंकिंग पर लाना पड़ेगा, हमें बच्चों को एक मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो एक नए नए आइडिया को वो भी शेयर करें। हमें अपने टीचर्स का जो कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं टीचर हूँ, मुझे बहुत आता है, मैं बहुत हूँ, उसे छोड़ना होगा। हमें बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करना होगा, उनके आइडियाज को शेयर करना होगा। अब वो हम ऑडियो से भी कर सकते हैं, अब तो खैर ऑफलाइन होने लगा है, हम उनसे वीडियो भी बना सकते हैं। अब देखिए जैसे अब आप कहेंगे सर आप बातें कर रहे हैं, आपने क्या किया इसके लिए? तो सर देखिए मैंने क्या किया अपने स्कूल में, मैंने इस कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग को एक प्रोडक्टिव मैनर में किया। आई डिस्कस विद माय मैनेजमेंट और मैंने उनसे कहा कि ऐसा करते हैं सर, हम मैगजीन हर साल निकालते हैं और एक ट्रेडिशनल पेज होता है हमारे पास, और लास्ट के जो फर्स्ट 2 पेजेस जो बहुत क्रिएटिव होते हैं वो हम जो पब्लिशर है या जो प्रिंटर है हम उसको छोड़ देते हैं। नहीं सर, हम करेंगे बच्चों को, हमने एक कंपटीशन कंडक्ट कराया सर। हमने कहा आप एक ऑडियो और वीडियो के माध्यम से हमें एक पेज डिजाइन कीजिए, फ्रंट पेज और लास्ट पेज, जो द पेज मस्ट स्पीक अबाउट द स्टूडेंट एंड द मैगजीन एंड अबाउट द स्कूल। तो मेरे पास लगभग 200 एंट्रीज आई। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर माय डिपार्टमेंट टू सेलेक्ट दैट। बहुत अच्छी आई, तो मैंने उनको चैलेंज दिया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर आप देखिए, कभी पढ़े, गूगल में भी देखिए, जो मैंने सेमिनार्स में भी अटेंड किया है और जो बोला भी है, उसमें क्या है देखिए, वो पहले बच्चे को टास्क देते हैं एंड देन दे आस्क टू कंप्लीट दिस टास्क। इट मींस दे डेवलप लीडरशिप क्वालिटी। हमारे यहाँ लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वन साइडेड कम्युनिकेशन है, टेप रिकॉर्डर सिस्टम है हमारे यहाँ। टीचर क्लास में गया, जो उसको आता है उसने बोल दिया, कभी वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करता। हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे तभी हम एक गुड क्वालिटी एजुकेशन वी कैन इम्पार्ट, वी कैन डिलीवर। और जब हमारा प्रैक्टिकल बेस होगा, अब देखिए कितने लोग हम बताते हैं, अगर आप देखिए केबीएस में तो मैं जानता हूँ कि बहुत सेमिनार इस तरह के होते हैं, लेकिन पब्लिक स्कूलों में कम होते हैं, होने लगे अब। तो देखिए प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग कैसे कर सकते हैं? अगर हम बच्चे को ये बताएं कि आपकी पाइप, सारी जितनी पाइप होती है घर में, हमारा आप रोज यूज करते हैं, वो सर्कुलर क्यों होती है? अगर मेरा टीचर जब प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिविटी विस्कोसिटी में पढ़ाए क्लास 11th में और बता दे कि A into V इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है और A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो इस कांसेप्ट को अगर वो टरबाइन से जोड़ दे, इस कांसेप्ट को अगर वो टीली डैम के साथ जो टनल्स होती है उसके साथ जोड़ दे, तो बच्चे को एक वर्चुअल इमेजिनेशन हो जाएगा कि हाँ इस तरह से टरबाइन रोटेट करती है और ये इसका इम्पैक्ट होता है वाटर फ्लो का, ये मोमेंटम का इम्पैक्ट होता है। अगर मैं उसको मोमेंटम इस तरह से समझाऊं कि एक बुलेट मेरे पास है, अगर मैं उसको आपको मारता हूं तो हो सकता है कि आप हर्ट कर जाएं, लेकिन जब मैं वही बुलेट एक रिवॉल्वर में या बंदूक में भर देता हूं और फायर करता हूं तो फिर रिजल्ट आप जानते हैं। तो इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? तो जब बच्चा अपना माइंड यूज करेगा, क्रिएटिविटी करेगा, इन्वॉल्व करेगा अपने आप को, तो वो इंजॉय करेगा टीचिंग को। तब उसे लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, आई एम ऑल्सो एक कंपोनेंट ऑफ दैट। तो हमें क्या करना है, पहले हम लोग क्या करते थे, जब बच्चों को समझ में आ जाएगा कि ये मोमेंटम का रिजल्ट है, ये इम्पल्स है, तो देखिए उसको सारे कंसेप्ट समझ में आने लगेंगे और वो उसको डेली लाइफ में एक्सक्यूट करने लगेगा, तो वो एंजॉय करेगा फिजिक्स को। अभी हम देखिए सर, हमेशा हम बोलते हैं सर एक फिजिक्स के बहुत लर्नेड प्रोफेसर है, तो जानते हैं कि फिजिक्स को सब बच्चे बर्डन मानते हैं, लेकिन अगर हम फिजिक्स को इस तरह से जोड़ लेंगे, हम उनको इन एग्जाम्पल के साथ एसोसिएट कर लेंगे, तो क्लास हमारी इंटरेक्टिव हो जाएगी। हम बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे तो जब बच्चा इंटरेक्टिव हो जाएगा, जब हम बात करते हैं आपस में तो हम इंजॉय करते हैं, हम किसी किटी पार्टी में जाते हैं तो इंजॉय करते हैं, क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्टिव है। हम कहते हैं बहुत बोर था, कुछ नहीं हुआ, चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे, नहीं, बट व्हेन वी इन्वॉल्व आवरसेल्फ वी एंजॉय दैट मोमेंट। सो वी हैव टू क्रिएट क्लासरूम इन दैट वे वेयर वी आर गेटिंग आइडियाज फ्रॉम दैट। सो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। हमें बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन भी देनी पड़ेगी और हम दे रहे हैं इस तरह से। हम उनको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एजुकेशन भी दे रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे मैंने बताया कि देखिए धीरे धीरे हम वर्चुअल क्लासरूम लेबोरेटरीज की तरफ जा रहे हैं। नो सिस्टम कैन रिप्लेस ट्रेडिशनल क्लास प्रैक्टिकल लैब, दैट आई डू एग्री, लेकिन अब उसको हम कैसे करें? अब सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन फोर्स अस टू लर्न सो मेनी थिंग्स। तो हमने क्या किया, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्किल शेयर नहीं, मैंने अपने टीचर से कहा है कि आप प्रैक्टिकल करें और एक साथ 15-15 बच्चों को, क्योंकि बहुत ज्यादा सिग्नल भी हो जाते हैं, तो 15-15 बच्चों का ग्रुप बनाइए आप, जैसे प्रैक्टिकल सीबीएसई में कराते हैं, और उनको लेबोरेटरी में कनेक्ट कीजिए और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करिए। उसके बाद सेकंड डे बच्चे को टास्क दीजिए और उससे पूछिए कि नाउ एक्सप्लेन दिस वर्बली, कि आप कैसे करेंगे पोटेंशियोमीटर, कैसे करेंगे मीटर ब्रिज, या कोई टास्क दे दीजिए उसको, उसकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है, उसको दे दीजिए कि आपको एक मैनेजमेंट, ये आपको एक प्रोग्राम है, ये आपको ऑर्गेनाइज करना है।
स्कूल में आपको स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करना है और बीइंग ए स्पोर्ट हेड ये सारी जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसको कैसे इन्वॉल्व करते हैं। टीम आप खुद बनाइए, अपनी क्लास की बनाइए, दूसरी क्लास की बनाइए, जूनियर लीजिए, सीनियर लीजिए। उसके बाद मुझे आइडिया शेयर कीजिए और एक रिपोर्ट दीजिए। उसमें बच्चे क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, एक दूसरे के आइडिया को शेयर करेंगे और क्या होगा, देन दे विल लर्न विद द रियल वर्ल्ड जो वास्तव में हो रहा है। वी हैव टू आल्सो इनकॉर्पोरेट रियल वर्ल्ड लर्निंग। अभी हम क्या करें, टेक्स्ट बुक लर्निंग, हम रियल वर्ल्ड लर्निंग कहाँ कर रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हमें इससे क्या मतलब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलप हो रहा है, हमें इससे क्या मतलब, कंप्यूटर साइंस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इससे हमें क्या मतलब। मुझे तो इतना पता है कि फिजिक्स में मुझे मोमेंटम पढ़ाना है, केमिस्ट्री वाले को पता है मुझे जो हाइड्रोकार्बन पढ़ाने हैं या क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक पढ़ानी है या पीरियोडिक टेबल पढ़ानी है, वैसे हिस्ट्री सिविक्स में एक आइसोलेटेड है, वी आर विद प्रीफिक्स नहीं, अब नहीं, यू हैव टू अपग्रेड फर्स्ट योरसेल्फ और वैसे ही बच्चे को समझाना होगा। तो जब तक हम ये सब नहीं करेंगे हम अपनी क्लास को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं कर सकते। तो अगर मैं बहुत समराइज करूं, बहुत कुछ बोलने को है इसमें कि देखिए मैं बुक से हटके लर्निंग बाय डूइंग पर आना पड़ेगा, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपेरिमेंट पर आना पड़ेगा। हमें नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, हमें बच्चों के आइडियाज शेयर करने पड़ेंगे, उन्हें मोटिवेट इंस्पायर करना पड़ेगा, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए टू डेवलप देयर लर्निंग स्किल। हमें उन्हें ऐसे टास्क देने होंगे जहां पर वो ग्रुप डिस्कशन कर सके, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन आज की तारीख में देखिए हम भी तो ग्रुप डिस्कशन ही कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन आज की तारीख में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन प्रूव योर स्किल एंड यू कैन डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन देखिए हमारी आ गई वहां पर। कोई जरूरी थोड़ा है कि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन के जो कंपोनेंट गूगल में दिए गए हैं या जो हमारे ब्रोचर में दिए गए हैं उससे फॉलो करें। स्किल बेस्ड एजुकेशन है, उसकी स्किल डेवलप कर रहे हैं। हो सकता है कोई बच्चा बहुत आर्ट में अच्छा हो, ठीक है, उसकी स्किल डेवलप कीजिए, उससे कहिए कि यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ पिक्टोरियल बेस। तो इट इज पिक्टोरियल बेसिस लर्निंग। बच्चा उसमें क्योंकि इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छी सी पिक्चर बनाएगा और हो सकता है कि उसकी बनाई हुई पिक्चर आगे जाके आपका ही टूल हो जाए। तो यू हैव टू इन्वॉल्व। और मैं ये कर रहा हूँ अपने स्कूल में बच्चों के साथ कि मैं बच्चों का इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि एजुकेशन एक सिस्टम पर हो। इसीलिए आज की तारीख में शायद हम बहुत सक्सेसफुली क्लास कंडक्ट करा रहे हैं और सारे एग्जाम कंडक्ट करा पा रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि मेरा बच्चों के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। मेरे टीचर का बच्चों के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और वो वर्चुअली। मैंने कहा कि ये ऑनलाइन क्लास नहीं है। मैं नेगी सर आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि प्लीज आप भी अपने टीचर से रिक्वेस्ट करें, कमिश्नर महोदय भी यहाँ पर है, महोदय हैं यहाँ पर हैं, उनसे कहें कि इसको ऑनलाइन क्लास ना कहें प्लीज। Take it virtual class. Only eye-to-eye contact is not there. Otherwise, ask the student to create a virtual class inside. ये नहीं कि बिस्तर में बैठ के पढ़ रहा है, उसको कहिए कि yes, attentive as we are here. बैठने को मैं भी किसी कोने में बैठ सकता था, आप भी किसी कोने में बैठ सकते। Why you in the office? Why everyone has the proper background? क्योंकि मैंने virtual office create किया। वैसे उनसे कहें कि virtual आप अपनी क्लास क्रिएट करें, टीचर एक virtual क्लास रूम क्रिएट कर रहा है और जब हम दोनों वर्चुअल करने के बाद एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, आपसे जुड़ेगा, वो एंजॉय करेगा। और जब भी हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं, जब हम किसी में इन्वॉल्व होते हैं तो उसे एंजॉय करते हैं, वो हमेशा मेमोरी में हमारे रहता है। तो हमारी परमानेंट मेमोरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा एज ए टीचर हमारा ये काम है कि हमें वेलकम करना है जो न्यू आइडियाज है। हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है कि न्यू आइडिया दें। हमें अपनी एजुकेशन में उसको जोड़ना पड़ेगा, तभी हम अपनी क्लास को इफेक्टिव कर सकते हैं। पेडागोजी को हम, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये पीरियोडिक अरेंजमेंट, पीरियोडिक सिस्टम या सिस्टमैटिकल प्रोसीजर है ये ऑफ टीचिंग लर्निंग। हमें दोनों करना पड़ेगा, टीचिंग भी करनी पड़ेगी और लर्निंग को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें उन्हें टास्क देना पड़ेगा। अब देखिए कुछ जगह पर नहीं है, रिसोर्सेज कमी है, तो हमारे पास बुक है। आज की तारीख में एनसीईआरटी ई बुक अवेलेबल है, हम उसी में एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों से कहें कि आप यू डू सम क्रिएटिव थिंग्स फ्रॉम द बुक। तो देखिए बुक पढ़ने की आदत भी बच्चों को हो गई। हमने बच्चों को ये भी इनडायरेक्टली, क्योंकि जब हम उसको एसोसिएट कर देंगे उसके मार्क्स से, हम उसकी एग्जाम से एसोसिएट कर देंगे उसको, और ये तो है एआईएल आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ दैट, इंटीग्रेटेड लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ दैट करिकुलम। हम जब बच्चे को बता देंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ इससे आप ही का बेनिफिट है, तो वो बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। जब वो इन्वॉल्व होगा तो वो एंजॉय करेगा। ठीक है, जैसे सर ने बताया सुबह के सेमिनार में, उसमें क्या था, उसमें क्या फोकस किया गया, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट। एक स्कूल ने अपने आप को बच्चों की हेल्थ से ठीक कर दिया, गांव वाले की हेल्थ से ठीक कर दिया, एक छतरी वाले गुरुजी ने घर घर जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमें अपने आप को भी अपडेट करना है। बच्चों को एक ऑडियो वीडियो के माध्यम से वो एग्जांपल हम दिखा सकते हैं कि देखिए इस तरह से इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, ये इनोवेटिव आइडिया है एंड यू हैव सो मेनी व्हाई नॉट यू आर शेयरिंग दोस आइडियाज विद अस।
we will incorporate that in large interest of you and the organization. But ultimately किसका benefit है? मैं तो जिस saturation state पर आ गया बहुत कम scope है, लेकिन scope आपके साथ है. We must try to incorporate student with the education system. अगर हम आज भी सर देखिए माफी चाहूंगा मैं टॉपिक पे थोड़ा सा अराउंड हो सकता हूँ सर, लेकिन मैं इस बात को कभी फेवर नहीं करूंगा कि टीचिंग एंड लर्निंग वन साइडेड हो. टीचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द बोथ साइड. हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, हमें बच्चे को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी अपलोड करना पड़ेगा, हमें अपनी मेथोडोलॉजी को भी अपग्रेड करना पड़ेगा. और जो बात मैंने बताई, थिंकिंग स्किल, लर्निंग स्किल, इंटीग्रेटेड स्किल, ब्रेनस्टॉर्म, हमें उसके बच्चे के देखिए बहुत अच्छा है, उसको दिमाग में लगवाइए, उससे कहिए कि यूज तो करो. You have so many things. Brainstorm. Why not you are using gamification in your education system? लाइए gamification in your education system. Use brainstorm in education system. Why not? Who is stopping you? Whether your principal, KBS Sangathan or any of, no, they will be the one of the most happiest person. I personally feel whenever I go to the management, if you will go to your principal or your deputy commissioner, assistant commissioner, they will be one of the most happiest person. Yes, this is a more innovative idea where we can use brainstorm, creativity, thinking, learning by doing, learning by experimenting, innovative idea, learning by picturization, learning by video, means where everything is done by the student. तो देखिए जैसे हम पिक्चर हॉल में जाते हैं और हम 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं, पहला शो पहली बार देखते हैं और लगभग हमें 2.5 घंटे की पिक्चर याद हो जाती है. कभी हमने सोचा नहीं ऐसा क्यों होता है. पूरी किताब पढ़ते हैं, पूरे साल भर तक पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, हमें याद नहीं होता. क्यों? बिकॉज इन पिक्चर हॉल वी इन्वॉल्व आवरसेल्फ, एवरी सिंगल मोमेंट वी एंजॉय, हम उसे जॉयफुल बना कर रखते हैं, हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमें पिक्चर याद हो जाती है. क्लास में बिकॉज टीचिंग एंड लर्निंग मेथड इज सच बोरिंग, वन साइडेड कम्युनिकेशन है, सेकंड का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो बच्चा बोर हो जाता है, वो इन्वॉल्व भी नहीं होता, इसलिए हमारा जो प्रोडक्टिव टीचिंग है वो नहीं हो पाती. तो जब तक हम कुछ ऐसा ना करें कि हमारा बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो और वो अपने आप को उसका एक और कंपोनेंट समझे, मैं सर माफी चाहूंगा नेगी सर, कोई भी एजुकेशन सिस्टम, कोई भी एजुकेशन पॉलिसी, कोई भी करिकुलम फ्रेमवर्क हमारी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर सकता until and there is no involvement of learners who are actually the core component of the education system. So I think so I have completed my time. In case I just deviated from the track, I applied from the KBS Sangathan and their office bearer and today organizer Mr. Negi. Thanks everyone. I'm giving me chance for, and once again I thanks on behalf of Doon International School to everyone. Thanks sir and thanks man. थैंक यू सर. आपने गागर में सागर भरते हुए हम लोगों को समझाया कि क्या क्या नवीनतम मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. इन द सेम सीरीज आई वुड लाइक टू वेलकम तरन्नुम खान मैम. मैम प्लीज ओवर टू यू. Thank you, ma'am. Respected AC ma'am, respected DC ma'am, Ma'am Meenakshi Jain, AC ma'ams, Ma'am Alka Gupta, Ma'am Sukriti Rewani, convener of the webinar, Sir D.S. Negi, and Vice Principal ma'am, Ma'am Sangeeta Khurana ma'am. At the very onset, I would like to thank each one of you for having offered me this opportunity to express myself and present my views on this very important topic of innovative pedagogy. So otherwise I wouldn't have got such a platform, and the topic was also very interesting. Thank you so much. I start with with a quote which says that if we teach today's students as we taught yesterday's, we rob them of their tomorrow. If we are teaching today's students, the requirements of the future are different from what the requirements are today, right? The way we were taught, we were prepared for this level. But if we continue with the same thing for our children, we'll be robbing them of their tomorrow. We won't be preparing them for tomorrow. So we are here, we the educators are all here to prepare our children to face tomorrow and to grow into children we can feel proud of, who can bring pride to their schools, to their parents, to their society and the nation as well.
So let us all leave no stone unturned in bringing up their levels to the levels of expectations. Now, when children start schooling, I basically, because I am a primary teacher, I always keep primary children in my mind, the small ones in my mind. Although some of the points will be related to the elders as well, but still most of them will revolve somewhere around them. Now, when children start schooling, when first time they go to school, they are sparkling with imaginations about the school. They think so many things about the school. They have fertile minds. Their minds are fertile, ready to learn and willing to improve. They are too keen to learn in the school. Innovative pedagogical practices from our end would be potentially of great benefit in improving their levels. If we involve innovative pedagogical practices in our teaching, we can bring about that improvement which they desire, which they require. Our purpose is not only to make them literate. We are here not just to make them literate, but to make them creative, knowledgeable, and develop their own thinking. Mainly develop their own thinking. We need to guide them in the right direction so as they develop their own thinking. They themselves become able or capable of carrying out inventions, right? So we are to guide our children in such a manner. So such should our teaching strategies also be. Now, when we are teaching, we definitely want our students to succeed. The success of students depends on the innovations used by the teacher in teaching. If we teach a particular topic to a child in a very basic manner, simply we explain the concept and give them some written work, of course the child would definitely follow the teacher. He holds a high sense of respect for the teacher. He'll definitely do that. But on the other hand, if we teach the same concept with the help of an innovative activity involving him, his friends, his family members, he'll definitely take a greater interest towards it. So, the better our innovations are, the better would be the rate of success of our students. The use of innovative efforts improves education, it empowers our children, and would result in them making a good government or a good country in future. Now, whenever we sow a seed, हम कोई पौधा लगाने के लिए जब हम बीज बोते हैं तो हमारी बीज से कुछ उम्मीदें होती हैं, right? If it is a flowering plant, we expect it to have very beautiful, colorful blooms so that our garden becomes beautiful. If it is a fruit tree, we hope that one day it would give rich fruits in it, right? Very tasty ones, which can be of benefit to us all. Same way, when we teach our children, we want to reap the fruits of success from them. And in order to make our teaching and their learning fruitful, we need to maintain their positive attitude towards it. The positive intellectual and emotional state of mind. They should feel positive about learning. They should be happy to learn. And they will be happy to learn only when they derive pleasure out of it. जब उनको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा, interesting लगेगा, they'll find themselves a part of it, they'll feel satisfied. तब उनको वो satisfaction मिलेगा. And when they get that satisfaction, they will the attainment of learning outcomes would be of a greater standard. So in order to help them attain these learning outcomes, we need to include the element of joy, happiness in our teaching processes, because it would help them move towards a stress-free learning. To ensure active learning and attainment of learning outcomes, we should involve
the whole class. As far as possible, we need to try to involve the entire class or the maximum number of children we can, or we can give them group work or some guided learning work or individual activities. So several such things can be given. So today we are here, we'll be discussing just a few tips to make our teaching, our classroom interesting. Okay. One second, I'm sharing my screen for a minute. Of course, all students can learn and succeed. Each one has the caliber to succeed, but not on the same day and in the same way. Everybody learns at his or her own pace. So we need to devise our teaching strategies in a manner so as to cater to needs of each and every child. Now these are just a few basic tips which can make our teaching learning interesting. These can be considered as innovative teaching techniques that we can use in our classes. The first step is to incorporate mystery into the lessons. When we start a lesson, we may be telling them that tomorrow we'll start lesson number 2. Now, what happens? We plan our lesson very well and we are very much ready to introduce the lesson. But the moment we start the lesson, I'm talking about a primary teacher, when we start the lesson and we are very much interested into it, we want all our children to take part into it. From that corner, one child says, "Ma'am, lunch break kab hoga?" So that shows the child was not that much interested in the lesson. He was waiting for the lunch break. So what to do to get his interest? We can incorporate mystery into the classes. Instead of directly introducing a topic for 1 day or 2 day or a little longer time, we can keep telling them next Monday we'll be doing something very interesting activity we'll be doing. We can show a short video clipping also to them, and we can keep changing that, so the child will be interested कि अरे भाई मंडे को मैम क्या कराएंगी. He will be very much interested, and on that very day, before that very period, he will be all set कि अभी पानी वानी पी के I'll be ready so that I can take part in ma'am's activity. So that day he won't ask when will the time of lunch break be. So we have created a mystery into the lesson. And then when we start the same topic, of course, our method should be interactive one, an interesting one, and the child will definitely get absorbed into the topic. Right? So this way, by creating a mystery, we have got his interest. The second thing that we can practice is, don't repeat classroom material. Of course, we need to review the material. We want our children to revise, but as far as possible, try not to repeat the same material. Like these days, in virtual teaching, as I said, we are using presentations and all such things. Once the topic is over, we want to revise the topic and we show the same presentation. So when we show the same presentation to them, when we use the same material, the child may lose interest in it. Instead of directly repeating the topic, we can change our strategies, we can modify our own teaching method. We can ask them, like a very quick strategy can be a 3-2-1 strategy. उसमें हम बच्चों को कहेंगे कि अच्छा बेटा हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, we have completed it, now you make a pyramid or a triangle obviously is broader at the base and pointed at the tip. Our small children also know that. Now at the base you write down 3 things you learned from the topic. The 3 things that you learned. Then at the second level you write 2 which you found very interesting. Then at the topmost point you write 1 thing that you still want to ask from your teacher. 1 question that you still have about the topic. Now within 2 to 3 minutes or at most 5 minutes, the entire class would have written that, and once we go through their responses, we'll know what they have learned and what is still to be taught to them.
It can be a very interesting strategy. We have revised also. And then we can again, in case some topic is to be repeated or revised, we can reframe exercises. We can have quizzes for it. There are so many very interesting quizzing apps also. So we can include them. Online classes mein to we are also using fastest finger first sort of quizzing also. Once we teach the topic, then the very next day children are very eager ki ma'am fastest finger first kab hoga. So instead of taking a written class test or on Google form, I just read out 5 questions to them and they type the answers. And then I say after the second question is asked, if the somebody asks the answers the first one, he will not get marks for. So they are learning quick typing and quick answering. So that can be one way to revise the topic. The third one can be, we can have classroom games. We can create some new games, not the very traditional ones. We can create some games for them, like for improving the spelling ability. We can have a spelling bee. For maths, we can have a maths bee competition, not competition, game. And how can it be played? Like for spellings, we can have a list of spellings from that particular topic or that particular concept, and each child will be asked one spelling in turns, right? And in case one child spells a wrong word, spells a word wrong, he'll be removed. Okay, he'll be out, and the next one, and at the end, the one who remains till the end will be the winner. The same way, mathematical games can also be played. Mathematical bee can also be played. So this can be one way. Children are interested in games. Games are a prescription for happy kids, so they'll be happy and they'll be learning so many spellings. Just imagine 40 children in a class. So even if we take 2 rounds, 42s are 80. So we have revised 80 spellings in a class, right? And whenever a game is played, and I still remember when I was a student, the mistake that I made, I still remember that answer, the correct answer to it. So when we learn in the class, when we are answering a question, हो सकता है हम आंसर गलत दें, पर उस गलत आंसर का सही आंसर हमें उसी टाइम पता चल जाता है और वो हम कभी नहीं भूलते. So that is the best way to make our children learn. The next way, we can give them choices. Instead of we deciding the task for them, we can have a checklist, a list of tasks for them. We can assign them 4 to 5 activities. हम उनसे कह सकते हैं, you select the one, which one, any 2 you want to do, you do any 2 that you want to. Okay. And although all the 4 activities, 4 or 5 activities that we have given will be related to the same learning outcome, but they will make a choice. वो अपना select करेंगे. जब वो अपना select करके करेंगे, तब उनको अच्छा लगेगा कि हाँ तुमने कौन सी ली, मैंने ये ली, तो they will take a greater interest. So that way we are involving them and we are engaging them also. In all these things, you'll see that children are engaged. They are always involved in the class, and so they are liking the class. The next one, very important one, we can make our lessons interactive. Always let them speak. Okay, although we keep telling them to keep their mics off, to mute themselves, but we must try to make them speak also at some times. Otherwise, even in virtual classes also, if everybody is sitting quiet, no response from the other side, we won't be able to know how much they have learned and how much they haven't, right? So they feel a sense of achievement in answering a question, especially when we take class 1. I'm teaching class 1 also. When I teach class 1, and I make it a point that every day every child gets a chance to answer. But of course, it never so happens. Every day there are 8 to 10 children whose turn doesn't come, and at the end of the class they are still waiting कि मैम हमारा turn नहीं आया, we didn't get a turn. So they all want to take part in the class. So we can try our best to keep our class interactive. The next point can be flip your lessons. The term flip refers to changing the role of the teacher and the taught. Right? We can flip our lessons. This can be used for a little higher grades. For classes 4 and 5 also we can start with it, and for even the upper ones. So we can tell children to prepare the topic in advance. हम पहले ही उनको बता सकते हैं. We can give them the topic. These are different ways. Of course, all techniques cannot be used for a single topic.
But for every topic, there can be one or the other technique, right? So we can tell them to prepare the topic, they'll prepare the topic and come. The next day we'll have a critical analysis of the topic. कि ठीक है आपने क्या पढ़ा, आपको क्या समझ में आया, वो हम एक्सप्लेन करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे. Whatever the doubts are, those doubts will be clarified and there will be a reinforcement of concept. If any concept clarification is required, the teacher will then teach. But then the child who has already prepared the topic, बच्चे जो prepare करके आए हैं, they'll be very happy and they will be able to learn in a better manner because they learnt it themselves first. So there will be a sense of achievement also. And it can be one way, one form of differentiated learning. We have different types of learners in our class. So those of them who could understand it, understand the greater part of it, will understand that and they can guide the others. The others who require our guidance will also be provided with that. So this flipping the lessons technique can be very fruitful. Now this is just one example. Like we have this poem in class 1 book. My daughter is in class 1 and that day I made her read the book. Okay, she was reading this poem and she didn't want to read actually. Okay, so she was reading one little baby eating a bun. This way she was reading. कह रही थी okay mama हमने पढ़ लिया. तो उसने कहा now it's your turn, you read it. So I read it. One little baby eating a bun. So she felt very excited. She said, हाँ, yes mama, ये तो बहुत interesting है. Two little children go to the zoo. Three. So, like the child who takes pleasure in some tunes or intonations will find it very interesting. So she got interested and she said, "Ah, mama, now it is very interesting." Then I had some work and I was supposed to do that work. And she was continuously reciting. Keh rahi, "Mama, ab to tum mere saath nahi bol rahi ho." So because I didn't have the book, now what would I do? This is one form we can practice with our children in the class. So she said, when she said the first one little baby eating a bun, and then I said एक छोटा बच्चा खा रहा है केक. तो कह रही अरे वाह ये तो बहुत मजेदार हो गया. अच्छा मम्मा अब मैं ये वाला बोलूंगी तो वो वाला बोलना. ठीक है. तो similarly we completed the entire poem. She said the English version of it, changing the character and changing the activity also. And I did the same in Hindi. So that way, just imagine, I was doing my work and she was just standing by my side. But that way, we have learned so many things. We have learned numbers, translations, rhyming words also. At times, she said two little children, she said some other word. So I said, no, the word should rhyme with zoo, to zoo. So what else can you say? And she thought of another word that rhymed with to. So that way we have taught numbers, translations, English to Hindi. In Hindi also we learnt numbers, then rhyming words, and we enjoyed the task. So at the end of the day, it was a very interesting activity. And the remark I got from her was, "Arey wow, mama, तुमने तो ये बहुत ही लाजवाब तरीका बता दिया." एंड शी वाज सो हैप्पी अबाउट इट कि हाँ मम्मा ने मेरे साथ एक गेम खेला, एक तरह का गेम हो गया ना उसके लिए. So this way we can keep our children interested. If we take part in their games, in their own techniques, they'll definitely find it interesting. Okay. Like today also one parent came to me, and because we keep our classes interactive, we keep involving their family members, their friends, everyone. So the parents are very much interested. These days we are teaching phonics in our classes, class 1 and 2. So one parent had come, he said, "Ma'am, how is he doing these days?" So I said he's doing very well now. How has he improved so well? तो ही सेड कि मैम आजकल ना हम इनके साथ बैठ रहे हैं, वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं आता पर हम बहुत कुछ सीख रहे हैं मैम. तो जस्ट इमेजिन, we are teaching children and their parents as well. We have many such first generation learners in our classes. So if we teach them in this manner, if we keep them engaged with their family members also, we are using alternative academic calendar. Many activities involve their parents, and parents are
taking good part in all the activities. They are more eager than their children. So we are teaching the parent, one parent at least, if not both, at least one parent is taking interest. That's why we are getting the work done, and the child as well. So these are different ways that we can use to make our teaching interesting, interactive, and retain our children's interest. Thank you, everyone. I hope it turns out to be fruitful. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Really, you were wonderful. And today you taught us to be mysterious and teaching through games and music and giving them choices. And obviously, interaction is a vital role, vital part of teaching learning process. And you are right in saying that virtual classes with mute students is of no use. Yes. And basically, you have taught us today to be joyful ourselves first, then only we can create joy in our classes. क्योंकि जो हमारे पास होगा हम वही बांटेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ टीचर हैज टू बी हैप्पी एंड देन वी कैन क्रिएट हैप्पीनेस इन आवर क्लासेस. और ये बहुत अच्छा मुझे पर्सनली लगा कि आप बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी एजुकेट कर रहे हो. सो इट इज अ बेनिफिट ऑफ वर्चुअल क्लासेस ओनली. थैंक यू सो मच मैम. Now we have Dr. Ankit Joshi, and we are really honored to have you, sir, in today's webinar. Sir, I wholeheartedly welcome you. Please, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Uh, we are discussing innovative pedagogy to promote enjoyable and engaging learning. That means, directly, that means we are talking about teaching. Primarily, teaching is not a very simple task. It's a very complicated task, a very complex task. And pedagogy is at the heart of the teaching learning process. Teaching learning means a very effective communication between the teacher and the learner. Now, we are talking about the innovative pedagogy. What is the importance of pedagogical content then? What is the importance of pedagogical content knowledge then? If a teacher knows the pedagogy, then he has some choices that how to initiate the classroom process, how to organize and maintain the momentum of teaching learning process in the classroom. So, the very important function of pedagogy is to organize learning. I'd like to be very specific. If a teacher is teaching in a classroom, that means he is practicing a number of minute, subtle practices in the classroom to make the classroom vibrant, to achieve the ultimate goal of the classroom process, to ensure the achievement of learning outcomes to all the learners. So, a pedagogy should be adopted where there should be input to the learner and opportunity to create output also or outcomes. Today we are talking about the outcomes in this 21st century. A very strong pedagogy is that where there is where the pedagogy considers every student's learning needs and is able to involve each and every learner in the teaching learning process. And for that, he needs to create the learning environment, including ensuring the inclusive education in the classroom. But a teacher faces a number of challenges. All the students who enter in the classroom, they are having different backgrounds. In fact, they are having their own customized learning plan. So it's a very challenging task that a teacher has to ensure learning to all. He has to consider the current knowledge, the individual goals, and the goal of the education, and the goal of the subject,
So it's not a very easy task. The problem is global. Every school in the school system, they are facing this challenge that how to organize learning for large number of students while at the same time responding to the diverse needs of each one of them. Because each and every child is very unique. Each one is having different pace of learning. So the class is full of diversity. A student is entering with a vast range of differences or a number of dimensions. Then how to cope up with each and every student? That is a very difficult task or challenge to each and every teacher. They are having different cognitive capacities. They are having different subject-specific competencies. Then we need innovation. So why innovation? What is this innovation? Innovation in pedagogy. That means the existing pedagogy is not in a position to fulfill the requirement of the classroom process. And to ensure the ultimate goals of the classroom processes, we need to be more innovative. We need to learn. A teacher needs to think that how to ensure all the learning outcomes to all the children, irrespective of the pace of the learning, irrespective of the background of the learner. And today we are talking about the 21st century skills. And 21st century skills, they are focusing on critical thinking, collaboration, communication. So the biggest challenge is that how to have a vibrant classroom, how to achieve an effective classroom process. And for that, we need innovations in our pedagogy. So, and it's not about innovations only. The innovation should be enjoyable, because teaching itself, learning is a very enjoying activity. So the innovation should be enjoyable. The teaching learning should be effective. So that's why today throughout the world, a number of researchers, they are showing that the one of the best classroom process is that we need to provide experiential learning. But again, the difficulty is that how to ensure experiential learning to all the children in a classroom, because of the diversity, because of the different ways, because of the different background. So these are the challenges, and a teacher, he will have to learn, he will have to innovate. आपको पेडागोजी में चेंज लाना पड़ेगा अगर आपको इफेक्टिव होना है तो आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी. आज हम किसी भी बात को याद करके फैक्चुअल चीजों का जमाना चला गया है. हम एप्लीकेशन मोड में काम करते हैं, हम स्किल्स की बात करते हैं. आज की तारीख में फॉर एग्जांपल छोटा सा स्किल है, मैथ्स में हम बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे को ऐड करना आता है, उसको सब्ट्रैक्शन आता है. अब हम 2+2 नहीं पूछते हैं, 2+3 नहीं पूछते हैं. अब जमाना आ गया, हम बच्चे को इस सिचुएशन में डाल देते हैं. हम उसको कुछ पैसे देते हैं, उसके बाद उसके 8-10 सामान मंगवाते हैं, उसके बाद उससे 4 सामान वापस कर देते हैं. फिर उसके बाद बच्चे से पूछते हैं अब आप बताओ आपके पास बैलेंस कितना बचा है. अगर उसको इतना आ गया, अगर उसको ये चीज आ रही है, अगर बच्चा ऐसा कर पा रहा है, दैट मीन्स उसने वो कॉम्पिटेंसी अचीव कर ली है. तो अगर हम 21st सेंचुरी की स्किल्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पूरी की पूरी क्लासरूम प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. हमारे टीचर्स को ज़्यादा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा. क्लासरूम प्रोसेस ऐसी बनानी पड़ेगी, इतनी वाइब्रेंट बनानी पड़ेगी कि हमारा हर एक लर्नर उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे. हमें बच्चों की प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं मानना पड़ेगा, हमें उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना पड़ेगा. हमें एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ना होकर के बच्चे, मतलब टीचर यहाँ पर सिर्फ एक कंटेंट डिलीवरी का सोर्स नहीं है. अब तो दुनिया भर में इतनी ज्यादा रिसर्चेस आ गई हैं कि हर कोई समझ रहा है कि नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है. एनसीएफ में ये सारी बातें पूरी दुनिया आज की तारीख में जान रही है कि बच्चा अपने नॉलेज
को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, हर एक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन करता है और टीचर उसमें जस्ट को कंस्ट्रक्टर होता है। तो क्लासरूम के अंदर इस तरीके का एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें इनोवेशन चाहिए पेडागोजी में। हम एक ट्रेडिशनल पेडागोजी, एक ट्रेडिशनल लेसन प्लान नहीं दे सकते हैं कि एप्लीकेबल होगा हर एक बच्चे के पास। हमारी क्लास में अगर 4 बच्चा है तो हर बच्चे का अपना एक कस्टमाइज प्लान होगा सीखने का, जिसको वो एंजॉय करेगा। और हमें इस तरीके से बच्चों को ले जाना पड़ेगा क्लासरूम प्रोसेस में, इस हद तक उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि बच्चा फेयरलेसली, जॉयफुली उस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और कुछ सीख करके जाए। सीखने का मतलब ये नहीं होगा कि हमने उसको 4 बातें रटा दी। सीखने का मतलब वो स्किल को अटेन कर पा रहा है। मैं आज की तारीख में आप में से किसी को भी साइकिलिंग या स्विमिंग सिखा नहीं सकता। मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ कि आपको साइकिल चलानी तो आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, आपको स्विमिंग करनी है तो आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, बट उसके लिए मुझे आपको सिचुएशन देना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कहीं स्किल्स को अटेन कर पाओगे। तो हमें क्लासरूम प्रोसेस में इस तरीके की चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एक चीज है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हमें अपनी पेडागोजी इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि असेसमेंट, हम हमेशा असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं कि बच्चे ने सीखा क्या। हमने चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर के बाद में हम कुछ क्वेश्चंस को बना देते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर हम बच्चे को बोलते हैं ये इतना % है, ये ऐसा है। बट स्कूल एजुकेशन सिस्टम लर्निंग की बात करता है, और जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली असेसमेंट 3 तरीके के होते हैं, जैसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज ए लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग बच्चा पेयर में करता है मेनली। जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं तो पेडागोजी का हिस्सा होता है। हम हर बच्चे को वॉच कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हम बच्चे को असेस कर रहे हैं वो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट पर हमें जोर देना पड़ेगा रदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर। जो हमारा सिस्टम असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, हमारा माइंडसेट ये हो गया है कि हम कहीं ना कहीं सम कर दें और बता दें कि हमारा बच्चा 90% वाला है या 99% वाला है या 65% वाला है। पूरी दुनिया ग्लोबली एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव आ गए हैं। इसीलिए हमें आज की तारीख में मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क के डिजाइन में हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। हम बात करें कि 5+3+3+4 हमें लाना पड़ेगा। क्यों? क्या हमारा 10+2 सिस्टम सफिशिएंट नहीं था? वो सही था, कल तक सही था, लेकिन जो फ्यूचर की नीड्स आ रही हैं, जो स्किल्स की बात आ रही है, हम आज कह रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन को आप जो है स्कूल एजुकेशन का हिस्सा बनाइए। हम आज कह रहे हैं कि ये स्ट्रीम्स को हमें खत्म कर देना चाहिए, एनईपी की मेनली जो रिकमेंडेशंस आई हैं। हमें इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे के एक्सपीरियंस को रिलेट करते हुए जो मेटाकॉग्निशन रेगुलेशंस बच्चा कर सके, इस तरीके की एनवायरनमेंट हमें क्लासरूम में डेवलप करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा कर पा, बहुत आसान काम नहीं है, बहुत आसान काम नहीं है। इनफैक्ट हम लोग बड़े जो क्या होता है कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड चला आ रहा है, हम लेसन प्लान तो बना लेते हैं टीचर को, बट वो क्लास का लेसन प्लान होता है। हमें एडेप्टिव लर्निंग की ओर जाना है। हम वो स्ट्रक्चर्ड जो हम लेसन प्लान देते हैं वो नहीं, वो उतना कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगा। हाँ, उसे एक सिस्टम तो हम बना सकते हैं कि हम टीचर की अकाउंटेबिलिटी उससे तय कर सकते हैं कि क्लासरूम में आज करेगा क्या, बट वो टीचिंग नहीं है। वो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है एक क्लासरूम प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वो लर्निंग को इंश्योर करेगा या नहीं करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हमें एडेप्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी, हमें इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, हमें आईसीटी का यूज करना पड़ेगा, हमें इस तरीके की पेडागोजी लानी पड़ेगी कि जो टेक्नोलॉजी की पावर है उसको क्लासरूम प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में यूज कर पाए। बहुत सारी चीजें आज की तारीख में आ गई हैं, हमें इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए इस तरीके की पेडागोजीज डेवलप करने की जरूरत है। हमें क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर हिंदी या मैं साइंस की बात कर रहा हूँ तो मैं ह्यूमैनिटीज की बात नहीं कर सकता। मैं बच्चे को मुझे रिलेट करना सिखाना पड़ेगा, उसकी क्लासरूम को जो क्लासरूम से बाहर की दुनिया है उससे जोड़ करके इस तरीके की प्रोसेस क्लासरूम में डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे बच्चा लर्निंग को एक्सपीरियंस कर पाए और अपने फैसिलिटेटर, टीचर बेसिकली एक फैसिलिटेटर है, वो सोर्स ऑफ कंटेंट नहीं है। आज की तारीख में तो कंटेंट हमें हर कहीं मिल जा रहा है, बच्चा कहीं भी गूगल करके उससे दुनिया भर का कंटेंट पढ़ा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट नाउ। जब हम टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर टीचर आ जाएगा, और जब हम टीचिंग की बात करेंगे और टीचर की बात करेंगे तो उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, हमें क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा इंश्योर करना चाहिए, हमें ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो टीचर टॉट रिलेशनशिप है वो इफेक्टिव कैसे हो। ये तब और चैलेंजिंग हो जाता है जब एक क्लास में 30 अलग अलग बच्चे होते हैं
और हर किसी की लर्निंग की पेस अलग है, हर किसी की समझ अलग है, हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग है। तो यहाँ पर हम बहुत ऑब्जेक्टिवली भी नहीं जा सकते, हमें हर एक बच्चे की समझ के साथ साथ पूरी क्लासरूम प्रोसेस को ले जाना होगा। इसलिए हमें इनोवेटिव पेडागोजी की आवश्यकता होगी। तो आई होप मैं शायद कुछ टॉपिक पर बात कर पाए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आप बिल्कुल टॉपिक पर ही बात कर पाए और आपने हमें बताया कि लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की आपने, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की भी बात की आपने कि लगातार हमें बच्चों के टच में रहना है, लगातार उनको असेस करना है और केवल ट्रेडिशनल असेसमेंट पर निर्भर नहीं रहना है। तो वी आर रियली बेनिफिटेड बाय योर थॉट्स एंड आइडियाज सर, थैंक यू सो मच। Now, I would like to request Vice Principal Ma'am, Khurana Ma'am, to extend a vote of thanks, Ma'am. Over to you, Ma'am. Thank you, ma'am. All teachers need to improve, not because they are not good enough, but because they can be even better. Jai Hind, everyone. Highly esteemed Madam Meenakshi Jain ji, Deputy Commissioner, KVS RO Dehradun, Honorable Madam Alka Gupta ji, Assistant Commissioner, KVS RO Dehradun, our most valued panelists, Dr. Ankit Joshi ji, Lecturer, SCRT Uttarakhand, esteemed Sri Dinesh Barthwal ji, Principal Doon International School Dehradun, Vivacious Madam Tarannum Khan, PRT KV Upper Camp Dehradun, esteemed principals of various KVs, Honorable Shri D.S. Negi ji, Principal KV number 1 HBK Dehradun, and attentive and thoughtful viewers. I deem a great privilege and honor to propose a vote of thanks on behalf of KV number 1 HBK Dehradun. We express our deep sense of gratitude to highly esteemed Madam Meenakshi Jain ji, Deputy Commissioner KVS RO Dehradun, for giving us this opportunity to organize online webinar on innovative pedagogies to promote enjoyable and engaging learning. Thanks, Madam, for your valuable guidance and motivation. Our heartfelt thanks to Madam Alka Gupta ji, Assistant Commissioner KVS RO Dehradun, for being supportive and a source of inspiration for all of us. Our hearty thanks to knowledgeable Dr. Ankit Joshi ji, Lecturer SCRT, for accepting our request to be a panelist in today's online webinar. Sir, your astute insight into the latest educational trends and innovative ideas will definitely help us in making the teaching learning process an enjoyable experience. Thank you, sir. We extend our sincere thanks to Honorable Shri Dinesh Barthwal ji for his enlightening views on innovative pedagogy to promote enjoyable learning. Sir, your words are pearls with wisdom for all of us. Thank you. Thanks to virtuous Madam Tarannum Khan, PRT KV Upper Camp Dehradun Cant, for a concise and focused presentation on the topic with the help of engaging slides. We really enjoyed it, ma'am, and feel much better prepared to make our learning more effective and engaging. Thanks, ma'am. Thank you, Our ma'am. sincere thanks to all the honorable principals of various Kendra Vidyalayas who spared their valuable time to join us today. Thanks, everyone. I would express sincere gratitude to our strength and source of motivation, Honorable Shri D.S. Negi ji, Principal KV number 1 HBK Dehradun, for his vast experience and knowledge steered this
webinar in the right direction. Thanks a lot, sir. I owe special gratitude to the fluent host of the webinar, Madam Preeti Singh, PGT English, ardent Shri Manoj Bhulia, PGT CS, and dedicated staff of KB number 1 HBK Dehradun for their sincere efforts to make this webinar a great success. Thanks one and all. Jai Hind. जय हिंद, जय हिंद मैडम, जय हिंद। जय हिंद मैम। Thank you, Madam Sangeeta, and thank you all members of panel, Dr. Joshi, Bhatwalji, Madam Tarannum, and Madam Preeti Singh and Bhuliaji for your wonderful cooperation. Thank you and Jai Hind. जय हिंद सर। Thank you, sir. Thank you. जय हिंद सर। जय हिंद। Thank you, ma'am. Thank you. Yes.